Hi, welcome to our podcast show, The Life Diaries. I'm your host and host, Nikita Goswami. We're in conversation tonight with a very beautiful Priyanka Rajpal. Passion, glitz, glamour, travel, blogging, influencer life. Sounds so much fun and interesting, right? But is it so much fun and interesting? Let us know with her. Hi, Priyanka. Hi Nikita. First of all, thank you so much for having me here. Pleasure. So you do so much. You're a fashion blogger. You blog about travel, food. You have your own clothing store. Yes. You're an influencer. You have a full-time corporate job, Yes, right? yeah. How do you manage so much? So I think it's a habit now for me. It's like my regular routine for which people think that it's different, it's rare, but for me it's normal now because I'm so habitual of doing all of it together. I'm a person who cannot sit idle. So I'm in a habit of doing something or the other on a regular basis. So it's quite normal for me. I should salute you for that, though. It's very, very nice. You're a wholesome package, trust me. Thank you. So, blogging or the influencer thing, ये आपको हमेशा से करना था और what came like what was the turning point in your life? So कुछ plan नहीं था. Influencer thing as such कुछ था भी नहीं when I started like 6 years back. It was just I had this habit of exploring new places, new cafes, and fashion was in my genes since childhood. I was always interested in fashion. तो ऐसा कोई plan नहीं था कि fashion influencer बनना है या ऐसा कुछ. It just happened with the flow, and I don't know, like I started making my own content with my own clothes, with my own brands, skincare, beauty and everything. Then brands gradually started approaching me for collaborations, and that's how it started. So it all came organically. अपने आप Yes, ही. yes. You start posting on Instagram, and then by God's grace, brands do approach you. Very, very nice. So then now we being from like you're a girl, I'm also a girl. Yes. The Indian society, you know Yeah. how the mentality is. Yeah. किसने support करा, किसने support नहीं करा? I really want to know about this. So journey. my family has been supportive all the time. I'm a single child. I don't have any siblings. So being a girl child, they were like यही हमारा लड़का है तो इसको जो करना है करने दो. Job करनी है job करे, influencing करनी है influencing करे, जो करना है. So that was my wish. So, Full support था. Yeah, full support. Very, very nice. तो आपकी जो first reel थी या first blog थी, tell me some because first things are always special. What is it about? Honestly ऐसा कुछ मुझे फर्स्ट तो याद भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. बट इट वॉज ऑलवेज अबाउट क्लोथिंग फैशन. तब टिकटॉक चलता था. फिर टिकटॉक बंद हुआ तो पीपल ग्रेजुअली शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम. देन आई रिमेंबर इंस्टाग्राम बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन टिकटॉक. सो फॉर मी इंस्टाग्राम वॉज दी ओनली प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड मेक रील्स पोस्ट. रील्स तो अभी ग्रेजुअली आई हैं. पहले सिर्फ पोस्ट होते थे. तो आई थिंक that was my main thing, like posting my pictures whenever I'm traveling, going out, all that. Traveling is also your hobby. Yes, I love traveling. So your hobby became out to be your passion. Of course, if so travel किसको नहीं पसंद, and what better if hotels and resorts are hosting you, providing you free stay, travel, everything. So I think it's cherry on the cake. What else do we need? Free travel and fun. Yeah. But is it actually that much fun जितना कि दिखता है कैमरा पे कि बस हम जा रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं और हो गया? ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी. लोगों को लगता है ये लोग पार्टी करते हैं, चिल है इनकी लाइफ यार. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी मेहनत होती है हर शूट के पीछे, हर कोलैबोरेशन के पीछे. इट्स नॉट एट ऑल ईजी बिकॉज हर चीज़ हमें परफेक्शनिस्ट की तरह करनी पड़ती है. हर चीज़ प्रोफेशनल होनी चाहिए. सो एक कैजुअली जाना शूट करना अलग चीज़ होती है और प्रोफेशनली हर चीज़ को करने के लिए एक अलग ही मेहनत लगती है. Exactly. Quality content तो तभी निकल के आएगा ना. Otherwise you are you because of you deliver quality. Yes, वरना तो इतने सारे आजकल ब्लॉगर्स सब उनके कुछ नहीं होता बिकॉज वो कुछ भी डाल रहे हैं. मेरे को खुद लगता है कि जिसको देखो बट यू आर द प्रियंका राजपाल फॉर अ रीजन बिकॉज यू डिलीवर सच क्वालिटी कंटेंट. सो नाइस. तो कैसे सोचते हो कंटेंट आइडियाज लाइक अब ये करते हैं आप? कुछ ना कुछ मार्केट में ट्रेंडिंग चलता ही रहता है आई थिंक. बट आई बिलीव अपना कुछ करो सो दैट डोंट कॉपी पीपल की जो सब कर रहे हैं तो वही करना चाहिए. आई थिंक ब्रिंग अप योर ओन आइडिया सो दैट लोग आपको फॉलो करें ना कि आप लोगों को फॉलो करो. Originality basically is your mantra. That matters. Right. Be organic. Like I have the habit of coming up on my stories and talking with my audience. I think that matters. People should know how you are in real life. Right. Because real life and real life थोड़ा difference होता है. अगर आप stories पे आके connect नहीं करोगे audience के साथ, they would never know how the person you are behind the scenes. So that is very important. And your followers really want to know the real you ना. Yes, yes. कि वो बहुत help करता है. I love interacting with them. जो questions वगैरह का आजकल Instagram पे चलता है, that really helps, Yes, right? yes. You were telling me that you've
won certain awards, right? Yeah. So what awards have you won? So there are multiple awards. One of which very special to me was International Defender Award, which was with the government. And recently I was chosen as a voters icon for the Lok Sabha elections 2024 also. So I think there are multiple fashion awards which I've won over the years. So yeah, Very nice. feels great. How did it feel जब आपने first time award जीता? Yeah, feeling कैसे first थी? award is always special, but वही है ना, अब तो it's like normal only कि yeah, ठीक है. But then हाँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसे awards मिलते हैं तो. Very, very nice. So are you living your dream life? Yes, I am, and I am struggling daily because कोई भी satisfy नहीं होता. जिस position पे आप हो, you always want to achieve more and more. So I am on the same line. I want to grow day by day, and that is happening. So yeah. You pray for success and course. growth, Yes, and that's yes. how you grow. Very, very nice. So, अच्छा, tell me, who's your critic? जब आप अपने content create करते हो, before posting it, किससे पूछते हो कि My is this- close friends are my critic. Okay. I take approval from them because obviously they can't lie, and they'll give me honest opinions. So I show to them if it's right or not. And my family, my close friends are my critics. आप सबका वो लेके हाँ, हाँ. approval and then If I'm in doubt, वैसे Right. तो ऐसा होता नहीं है. हाँ, But अब अगर मुझे कहीं doubt आ रहा है, तो I take people's opinion, and that should be. very, very nice. So anything special coming up? Like any of your special ideas that you're uploading, trying to upload, like Many anything things you are wanna coming know? up, but I think secret को भी secret ही रखते हैं. So you'll soon get to know on Instagram about my future plans. Yeah. Right. Okay. So आजकल वो बहुत होता है, especially in the glamour world, कि we have frenemies. Like friends who are not your friends, but then they're your enemies actually. The jealousy or controversies, ये सब बहुत होता है. तो how do you कैसे judge करते हो कि ये मेरा friend है, ये नहीं है, and then how So do you in deal this with it? industry, making real friends is not at all possible. Though I have 2 or 3, but then it is very difficult to make real friends here because everyone is jealous, everyone is in competition. इसको ये क्यों मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया. So लोग, it's very difficult. Very difficult. So I think लोग आपके सामने कुछ होंगे, लोग आपके पीठ के पीछे कुछ होंगे. So it's better to make them acquaintance only. Real friends इस industry के बाहर ही रखो. तो I think that is fine. Yeah. So प्रियंका, जब आप स्टार्ट कर रहे थे, एक होता है ना फैमिली या फ्रेंड्स एक कोई सजेशन देते हैं, दैट एडवाइस जो आपके लिए वर्क करती है, व्हाट वाज दैट, लाइक इनिशियल एडवाइस दैट योर पेरेंट्स गिव कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे मत करना? So the only advice I got from my family was be real, and I think that is what I'm following because people who know me know I'm a very straightforward person. I'm not a people pleaser person. I'm not the kind of a person who would be sweet on your face and then behind the back be bitching about you. मतलब जो हूँ मैं मुंह पे हूँ और मैं आपको वही straightforwardly मुंह पे बोलूँगी. I don't care about anything else. I think I know what I am doing and that works best for me. You are just yourself. Yes. कि I don't care about the world. Yeah. Very nice. So okay, tell me something. अपनी strengths और weaknesses के बारे में बताओ. Strengths is that I'm a very hard-working person, which everyone knows. I give my 200% if any work is given to me. Weakness, I trust people easily and then I regret it later. Maybe I need to work on that more. अभी भी होता है ऐसा? अभी भी होता है because nature change करना बहुत मुश्किल होता है. है. I trust people, yes, I admit, but yeah, I need to work upon that. तो आपका क्या कहना है कि हमें फेक होना चाहिए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए या नहीं? So that is for some people it works, for some it doesn't. I don't know because I can't fake it. मेरी शक्ल पे आ जाता है. So I have not even tried. यार मतलब I don't believe in this. कुछ लोगों के लिए हो सकता है work करता हो, but for me it will definitely not work because पता चल जाता है. So I want to be real and I am following that only. You don't have a poker face. No, that I means. cannot. No. Nice. Okay, so जब आपने फर्स्ट स्टार्ट करा, एक तो आई हैव दिस क्वेश्चन जो मेरे को जानना है because there are so many people who wanted to enter into this Yes, profession yes. कि how do we start earning? अब रील्स अपलोड करते हैं, लोग देखते हैं और उसमें से पैसे आ जाते हैं. ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. Would you please? So पहले तो मोटिव वो मत रखो कि पैसा कमाना है. It was never my motive because since I'm into corporate job and all, so that is my bread and butter. Your focus should be on your passion. I follow this thing as a passion and hence I started earning. Because अगर उसी mindset से करोगे कि पैसा 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 तो वो पैसा आएगा भी नहीं. I think focus on your work, your quality work. People will notice you, brands will notice you, and पैसा automatically आएगा. But उस चीज के पीछे भागो मत.
कि वो फर्स्ट एम नहीं होना चाहिए, इट शुड फॉलो इवेंचुअली, बिकॉज इनिशियली इफ यू आर बिगनर इन्वेस्टमेंट भी होती है चीजों में. इफ यू वांट टू हायर अ फोटोग्राफर, राइट, नो फोटोग्राफर विल कोलैबोरेट विद यू फॉर फ्री इफ यू आर अ फ्रेशर, राइट. तो आपको अगर क्वालिटी कंटेंट देना है तो उसके लिए आप पहले फोटोग्राफर हायर करके उसको पे भी करोगे, राइट. सो इन्वेस्टमेंट भी जाती है, सब चीजें फ्रीबीज नहीं होती है. That means we have to invest initially, Yes, जैसे हर of बिजनेस course. में होता है, Exactly. and then the return comes. Yes, exactly. तो what's the key इसमें कि regular content, quality या everything, like how आप Consistency. इतना Consistency. Okay. I think if you'll not post consistently, so people will forget you, na? You have to be consistent with your quality content. That's what matters. Nice. So I was looking at your page on Instagram and I saw that she has 2.5 lakh, more than 2.5 lakh followers. How did it feel जब first 10,000 हुआ, 50 हुआ, 1 हुआ, milestones? I think initially it's very difficult to grab even 5,000 followers, but gradually then it becomes normal. जो वो starting के 5,000, 10,000 followers achieve करना होता है, I think that is the main milestone. Then तो फिर वो अपने आप होते जाता है. कि उसमें time लगता है, उसमें time लगता है, of course. If you are That's the regular struggle. and quality जो Yes, आपने बताया, everything works. Yes. So what advice will you give since आपको इतने 6-7 years हो गए इस इंडस्ट्री में, जो न्यू जिनको ब्लॉगिंग करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, उनके लिए क्या की सक्सेस मंत्रा आप दोगे? I think be yourself, focus on your quality content, don't be engaged in the negativities which is there around, just focus on your work and fully, just focus on your aim and goal in life. Right, that's very important. Yeah. And how to be different from other people, because हर कोई कर रहा है fashion, I mean clothing and travel. How to be different कि वो हर कोई ideas कर रहा है but हर कोई ट्रेंडिंग भी कर रहा है. So I think आपका ओरिजिनली आप कैसे हो, आप क्या नई चीज मार्केट में ला सकते हो, दैट व्हाट मैटर्स. तो हर कोई कंपटीशन तो है बट हर कोई ट्रेंडिंग भी तो है. Right. तो basically create your own trends. Yes, That's what of matters. course. जो मुझे Yeah. समझ आ रहा है आपसे बात करके Yeah. कि वो करो. Yeah. Okay. Okay, so let's talk about ups and downs here. Life कभी भी standard नहीं होती है, कभी downfall होता है तो upside होती है. तो कोई ऐसा क्या टाइम था जब आपको लगा कि ये मैंने प्रोफेशन गलत चूज कर लिया and I shouldn't be a part of this, छोड़ते हैं? प्रोफेशन गलत चूज कर लिए ऐसे तो कुछ नहीं, बट अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में भी काफ़ी आए हैं. सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years बैक, ये स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है. इट्स माई डार्क सीक्रेट. सो वी वर सफरिंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑन माई फैमिली साइड. सो आई वॉज द पर्सन हु took charge of the whole family. I was studying in college that time, first year maybe. Then I took the charge, started doing the events, and started earning, and I ran my whole family for a good span of 1 year. Wow. So I think लोग जो अब देखते हैं कि इनकी लग्जरी है, ये सब स्ट्रगल से मिलती हैं चीज़ें. I have struggled a lot in my life and being independent and doing hard work. So this side of me, I think most of the people don't know, but I have also struggled a lot in my life. Because अब ऊपर की चीजें देखते हैं ना. Yes, Success because is- we don't want to show our negative things, because people like to see only happy faces, and that's what we show. The behind the struggle people don't know. सोशल मीडिया को सिर्फ सब कुछ अच्छा दिखाना. Exactly. उसके पीछे की struggles, emotions, hard work, वो सब हम नहीं दिखाते हैं, because I think people will not be interested in knowing that. But हम ये story share कर सकते हैं just to motivate people कि ups and downs हर किसी की life में होते हैं, एक जैसा time नहीं रहता है, but you have to come up and be mature and become strong. And nothing comes easy. Yeah, and that's what made me mature at an early age, I think. So that's what helped me also. तो हर प्रोफेशन में ऐसा होता है कि nothing comes easy. No. चाहे वो ऊपर से कितना मर्जी सब कुछ ग्लैमरस लगता है, Yeah. but then you have to work hard towards it. Yes, yes. And तो वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि like this is what I want to do, या मैंने बिल्कुल ठीक किया है? Was this also the point? Yes, when people appreciate me, I meet so many people, and when they, वही होता है ना कि मुंह पे लोग इतनी तारीफ करते हैं, आपकी struggles को देख के appreciate करते हैं, तो लगता है नहीं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. So I think when my family appreciates me, my friends appreciates me, when my followers appreciates me, that gave me a lot of motivation, and I thought कि ठीक है जो कर रहे हैं ठीक है. keep going. Yeah, I think. And okay, so this industry is all about looking good, staying Yes, fit, yes. कि अच्छे दिखो, shape में रहो. तो आप ये भी सब मैनेज कर लेते हो with your job? I think yeah, मेकअप वही होता है ना कि रोज मेकअप लगा के बाहर जाना. ऑल्दो आई डोंट लाइक मेकअप पर्सनली, बट ये प्रोफेशन ऐसा है तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. अब वो हर किसी को नहीं भी पसंद होती, बट यार वो ये ना उठने का आलस कि यार अब फिर मेकअप करे, आधा घंटा लगाए जाए ये करे. बट
इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड, सो आई थिंक सबको करना पड़ता है. एंड ग्रूमिंग का तो चलो मुझे बचपन से ही शौक था कि ड्रेसिंग अप गुड, आई एम नोन फॉर गुड ड्रेसिंग, तो वो मेरा बचपन से ही था. बट हाँ, अब ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होना है कि मेकअप तो वो ना थोड़ा डेली का हो गया है. एंड हाउ डू यू मैनेज टू स्टे फिट, लाइक स्टे इन शेप? यार इतना तो मैं जिम नहीं जाती हूँ अभी, लाइक बेसिकली कभी कभी चले जाती हूँ, बट आई थिंक हम लोग का बाहर का खाना पीना इतना हो जाता है कि वो भी देख के थोड़ा खाना पड़ता है. सो वो अप एंड डाउन चलता रहता है कि थोड़ा बैलेंस डाइट, हाँ, कम करना खाओ, पड़ता है. मत खाओ बाहर का. हाँ. Okay, so I am a firm believer of positivity, law of attraction में मैं बहुत मानती हूँ. Me too. Gratitude. Oh, Yes. I'm so happy. तो आप how do you practice? आपका क्या टेक्निक है? इसको आप कैसे प्रैक्टिस करते हो? So I think I watched that movie, the famous movie Secret, and I've read that book also. That's what I follow. Whatever you think in your life, whatever you attract in your life becomes your reality, right? So if you will think positive, you will attract positive things will happen in your life, and you have to be spiritual as well. So I'm a very spiritual person. For the people who know me, so I follow spirituality and I believe in positivity, and that's how my life goes on. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके लिए वर्क करा है हमेशा? बिल्कुल करा है. मतलब ऐसा बहुत बार मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, जब होता है ना कि बहुत लाइफ में डीमोटिवेट होते हो और नेगेटिव होती हो, चीज़ें नहीं अच्छी चल रही होती, तो वही एक चीज़ मुझे मोटिवेशन देती है. सो इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर. Even I practice. It has always worked for me also. So totally relatable. I have the habit of writing down things. Yeah. Whatever I want, I do write it. Yeah. And believe me, same month में मेरे साथ चीज़ें हुई है. And that's the believe in technique. that. You have to write Yes, down you कि have to this write has and already happened. Believe that I have Yeah. got that thing. कि वो yeah. हो गया है, and फिर जब वो हो जाता है, that feeling, you know, of striking it off कि see ये हो Yeah, गया. yeah, right. That's such a nice thing. I think सबको करना चाहिए practice. That's a scientific truth. ये Yeah, पता नहीं है reality. सबको, but Yeah. it's a scientific law कि you बिल्कुल. give, like you receive what you give. Right. So प्रियंका, since आपने बताया कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, किस में बिलीव करते हो? कोई आप किसी को फॉलो करते हो, कोई like particular god or some? Yeah, this one to everyone knows, I think, because I believe in Guruji a lot. Like I was telling you, when I was facing downfall in my life, so I started following Guruji in 2013, I would say, and since that I have not turned back and looked back, and I think it has helped me, and I'm a very strong believer of Guruji. Do you go there often? Yeah. आश्रम आप जाते Yesterday हो? also I went. Yeah. Wow. I get peace, I get positivity, and that's what matters. Again, इसका भी आप टाइम निकाल लेते हो? वाओ, काम के साथ. ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है. काम से पहले भी ये जरूरी है, तभी काम है, आई थिंक. वाओ, अपलॉड. नहीं, नाइस. सबसे ऊपर ही आता है. बिल्कुल. क्या सपोर्ट सिस्टम. Yeah. किससे सबसे ज्यादा अटैच्ड हो? अपनी फैमिली, अपनी मॉम से या अपने डैड से? अब दो ही तो लोग हैं उसमें भी, तो आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू मी. दोनों ने आपको सपोर्ट किया था जब आप बिल्कुल कर रहे थे? अभी भी. और आज माय तक मॉम भी? तो ऑलवेज अकम्पनी मी इनटू इवेंट्स एंड ब्लॉगिंग, तो आई टेक हर एज वेल. तो शी इज तो लाइक माय फ्रेंड्स आल्सो नो हर नाउ, तो आधा काम वो भी देख लेती है. सो इट हैज बिकम नॉर्मल. शी इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर Yeah. एंड गाइड, लाइक अ फ्रेंड. Yeah. That's a nice thing. Any plans to get married? Searching for a guy. Searching for a good guy. Let's Nice. All the best. Thank you. Okay, so it was super fun and had a great time talking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and I hope to see you soon and meet you soon again. And I wish you all the best for Thank you. all your future endeavors. और जल्दी मिलेंगे. Likewise, it was so great interacting with you, Nikita. Thank you for having me on your show, and all the best to you too. Thank you. Keep growing. Thank you. You're a beautiful soul inside out, So and are stay you. the same. Thank you so much.